Hello beta, today we will solve few questions on real numbers. First question is explain why 3 into 5 into 7 plus 7 is a composite number. तो इसको हमने ये देखा, यहाँ पर these are two terms, बीच में प्लस का साइन है, तो यू कैन टेक 7 कॉमन. 7 कॉमन लेने से आपके पास बन गया 15 plus 1 16, which is this number, it has which has more than two factors. Therefore, it is a composite number. You know, composite number is always more than two factors. Next question is, can two numbers have 18 as their HCF and 380 as their LCM? ये जो HCF और LCM है, ये जो 18 should be a factor of 380, मतलब HCF should be a factor of LCM. तो this is not, no, because जो हमारे पास 18 है, 18 does not divide 380. इसमें HCF should always be a factor of LCM. So our answer is no. Next question is, find the largest number which exactly divides 280 and 1245, leaving remainder 4 and 3 respectively. So we will consider the numbers 280 minus 4 and 1245 minus 3, which are 276 and 1242. We will find out HCF of these two numbers. 1242 divided by 276, ये आपका 4 से 4 6 इसको करेंगे, you will get 1104. 276 ये completely हो गया. तो our HCF is 138. So 138 is the number which exactly divides these two numbers, leaving remainder 4 and 3. वो जो leaving remainder था वो हमने पहले ही माइनस कर दिया, तो वो exactly divisible के लिए हमने HCF निकाल लिया. Fourth question is, if A and B are given and X and Y are prime numbers, find out HCF. HCF is highest common factor, which is XY square. HCF हमारे पास दोनों में इधर x क्यूब है, इधर x है, तो x, इधर इट इज मिनिमम इज y स्क्वायर, इधर y क्यूब, तो HCF इज y स्क्वायर. एंड LCM will be x cube y cube. So these are few questions, simple questions, this on real numbers. Next question is, write the denominator of the rational number 257 upon 5000 in the form of 2 raised की power m, 5 raised की power n, where m and n are non-negative integers. तो इसमें आपने लिख लिया 5000 is equal to this. इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यू विल गेट 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4, विच मीन्स 2 की पावर m
into 5 की power n, where m is equal to 3 and n is equal to 4. अब हमारे पास you have to write the decimal expansion without actual division. आपको पता है कि 2 into 5 is 10 और जितनी बार 2 होता है उतनी बार ही हमारे पास 5 होना चाहिए. This is 257 upon 5000. This is 257 upon 2 3 times 5 4 times. अगर एक 2 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो you will get 2 and 5 both 4 times, which will be 10 4 times. So to make it multiply and divide by 2, you will get 514 upon 10,000. So its decimal expansion is 0.0514. Always prime factorization of 2 and 5 is required. जितने 2 होंगे उतने ही 5, so that it becomes a multiple of 10. So this is the how to do without actual dividing. Next question is, show that 12 की power n cannot end with the digit 0 or 5 for any natural number. तो 12 की power n you can write it 4 into 3 की power n. Again, after prime factorization, this is 2 की 2 to 3 की power n. This will become 2 की power 2n into 3 की power n. Prime factorization of 12 की power n does not have 5, does not contain 5 as a factor. Hence 12 की power n, ये आपको लिखना पड़ेगा सारा, इसको एक्सप्लेन करना है. दिस इज द रीजनिंग. कैन नेवर एंड with the digit 0 or 5 for any natural number. This was question. This is for any, ऐसे बेटा any number 6 की power n 4 की power n, तो to end with digit 0 it should have 2 and 5 as its factors. The next question is find the least number, या इसमें MCQ की फॉर्म में दिया हुआ है. The least number that is divisible by all the numbers from 1 to 10 will be, हम इसको निकालेंगे. Least number, it means we have to find the LCM of numbers 1 to 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. You know prime number से करेंगे. This is very simple. Just find out the LCM. Now it is divisible by 3 prime numbers ले रहे हैं हम. Next it is 5. Sorry, 1. So LCM is 2 into 2 into 3 into 5 into 7 into 2 into 3. ये सारे हमने मल्टीप्लाई कर दिए, विच इज इक्वल टू 2520. तो वी हैव डी चॉइस. तो आवर आंसर इज डी.
D is the right choice. Next question. The decimal expansion of the rational number 14587 upon 1250 will terminate after डेसिमल प्लेसेस, कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगा। इसके लिए हमने ये ले लिया, इसको अगेन यू हैव टू प्राइम फैक्टराइज द डिनोमिनेटर। 1250 it is 5 into 5 into 5 into 5 into 2. It will become 5 की पावर 4 into 2 की पावर 1। तो दोनों को 5 की पावर और 2 की पावर जो है वो हो जाएंगे तो 10 हो जाएगा। बट इट इज मैक्सिमम पावर, चाहे 5 की हो चाहे वो 2 की हो, दैट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 प्लेसेस। जो 5 की पावर है या 2 की पावर है, दोनों में से जो बड़ी नंबर होगी, द मैक्सिमम पावर, दैट विल बी द नंबर ऑफ डिजिट्स, आफ्टर दैट द नंबर विल टर्मिनेट। तो देयरफॉर it is 4, so it will terminate after 4 digits. So our answer is again B. That's all.